absolutely right. fixed deposit account. Hmm. Then reserve slip हमने देखा था, how we deposit RD, right? Then Standing question. yes, correct, very good, very good. So all these things we have seen yesterday, and today we have seen next step. It is regarding retail banking. Okay, it's very easy subject, scoring subject, and main important is thing you should means you will know the process of whole banking, especially every banking not same process, but this is the Yes. Flexi deposit.
Is not audible. Now I'm audible. Yes, ma'am. So, wait a minute, we'll just go back. Yes. Yeah. So housing loan sanctions, bank sanction housing loans also on that basis of if you want to purchase house, if you want to sell your house, if your house is what we say, you want to renovate your house. Okay, so on that basis, bank provide you a loan, and the limit of loan you will take it at the age of 55 years, right? So the loan amount will be calculated based on value of properties, right? And the loan amount would be 36 gross salary, 36 टाइम gross salary means continuously आपको gross salary जितना भी होगा उसके बेस पे कैलकुलेट करके आपको लोन मिलेगा, and 60 time of net salary. So customer whichever is higher, spouse income also considered. Yesterday we have seen कि अगर आपका इनकम कम है तो अगर आप स्पाउस का भी इनकम है और जॉइंट अकाउंट है तो बैंक प्रोवाइड यू अ लोन, and the margin it is 15% on loan, project cost, cost of land plus cost of construction. So total is this 30% for repairs. उसमें भी आपको लोन मिलता है, मतलब अगर रिपेयर मेंटेनेंस का करना है तो उस पर 30% मिलेगा. नाउ हाउसिंग लोन इंटरेस्ट रेट, देयर आर टू ऑप्शन. एक तो फिक्स रेट पे आपको मिलता है या फिर फ्लोटिंग रेट पे. फिक्स रेट पे ऐसा है कि आपको 20 इयर्स तक वही रेट से क्या करना है, बैंक को ईएमआई और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है. और फ्लोटिंग रेट व्हाट इट इज, फ्लोटिंग रेट इट इज फ्लेक्सिबल मींस हर बार आपके ईएमआई में से वो कम कम होता जाएगा, उनका कैलकुलेशंस होता है वैसा, ठीक है. सो द रेट आल्सो वेरीज विद द टेन्योर सिलेक्टेड बाय कस्टमर. आपने कौन सा टेन्योर लिया है उस पर डिपेंड करता है. सो देयर इज मैक्सिमम ऑफ 20 इयर्स टेन्योर ऑफर्ड बाय बैंक्स. हाउसिंग लोन repayment. So repayment period for purchase, construction 20 years EMI. So you should pay 20 years till 20 years EMI in repayment period. If you purchase new house, new constructed house, right? For repairs or renovations, 10 years EMI you should pay. Processing fees is 0.5% to 1% from bank to bank, and security it is mortgage of house to be purchased. ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है बैंक का. Cycle of a housing loan. So what is exactly cycle of housing loan? So origination, verification, sanction, disbursal and closure, right? So इसमें क्या होता है, आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होता है, फिर लोन सैंक्शन होता है, और आफ्टर उसके बाद डिसबर्स होता है, और फिर क्लोजर होता है. आपका जब फुल एंड फाइनल हो जाएगा तब आपका लोन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. नाउ so this is the eligibility criteria which, yes, this is the, am I audible to all of you? Yes. So this is the eligibility criteria uh, regarding housing loan. What it is, if customer has identified property to be purchased, right? So you must be at least 20 years of age when the loan is sanctioned, right? If आपको अगर हाउसिंग लोन चाहिए, एलिजिबिलिटी आपकी 20 इयर्स चाहिए जब आपको लोन मिलेगा, सैंक्शन होगा. मार्जिन क्या है उसमें, कस्टमर कंट्रीब्यूशन, कितना आपका कस्टमर का कंट्रीब्यूशन है, मतलब आप कितना अमाउंट का सिक्योरिटी बैंक में देते हो उस हिसाब से, या फिर अगर आपका न्यू प्रॉपर्टी है तो उसका वैल्यूएशन निकालेंगे वो एरिया का, उस हिसाब से आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा. Now submit housing loan application. Before that you need to submit housing loan
application, and the loan must terminate before on when you turn 65 of age or before retirement, whichever is earlier. ठीक है, so automatically the loan क्या होगा, terminate हो जाएगा if you are reach at the age of 35 years or you will retire. So जो भी जल्दी जो भी पहले होगा वो terminate. Then you must be employed or self employed with a regular source of income, right? अगर आप एम्प्लॉय है, रेगुलर एम्प्लॉय बोलो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय बोलो, तो डिपेंड ऑन योर इनकम सोर्स वो लोन प्रोवाइड करेंगे. नाउ व्हाट इज कस्टमर कंट्रीब्यूशन? Customer contribution is 15% of new house, right? 20% of old house and 20% for repair and renovation. So that is the margin. आपको 20% पे ये फ्लैट रेट पे, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा वो ऑन दैट बेसिस रहेगा मार्जिन पे. डॉक्यूमेंटेशन यू रिक्वायर्ड फॉर डिटेल ऑन टेक्स, मतलब जो भी है ना, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपके जहाँ पे भी रह रहे हैं, कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं, फिर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड से वो वेरीफाई करेंगे आपका कहीं और लोन तो नहीं है, आधार कार्ड से भी देख करेंगे आपके कहाँ कहाँ बैंक अकाउंट है, कितने कितने सेविंग्स है, वो स्टडी करेंगे और ऑन दैट बेसिस पे आपको वो लोन प्रोवाइड करेंगे. My voice is not low. हेलो, am I audible? Now am I audible? Yes, ma'am. Now documents for housing loan origination. So this is the documents you require for housing loan. First it is passport size photograph, which is most important. Then proof of residence, आप कहाँ पे रह रहे हो उसका residence का proof लगेगा. This applies only new or non-bank customers and could be either a PAN, identity card, voter identification card or passport. So that is required to required for submission the loan process. Now sale deed, agreement of sale, whatever you have done. Then bank account statements or passbook for the last 6 months ka. Then for employees or people in service, you also need to provide wherever you working. So all data you should provide them. Salary certificate, that is most important, and other information if any about your repayment capacity, right? Then form 16 you should be paid, yeah, you should be submit. Then income tax returns from last 2 years, right? Then for self-employed and other IT assessees, so IT returns for the last 3 years, receipts of advance tax paid, any other information about your repayment capacity, and in addition to the above mandatory documents, so you are also required to furnish one or more of the following documents, whichever is applicable. Letter of allotment for the housing board of society, जहाँ से भी आपको लोन सैंक्शन होगा उनका आपको लेटर मिलेगा कि यस you are eligible for that particular amount loan for construction, for flat purchase, for whatever the land purchase, whatever. Now copy of the approved plan, आपका जो sanction plan है वो देना होगा. देन आपका प्रीमाइसेस फॉर परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन, आपको परमिशन मिली है क्या, उसका अप्रूवल लगेगा. एनएमसी का आपका जो भी एरिया है, आपका क्या है बोलते हैं उसको, एनआईटी का है ना, एनआईटी मतलब जो इम्प्रूवमेंट सोसाइटी होती है, हर एक का अलग अलग है. ये सब परमिशंस आपको लगेगी, देन आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हो. देन कॉपी ऑफ द रिलेटिव ऑर्डर इन द केस ऑफ कन्वर्शन or agricultural land and not required where the house flat has been constructed by an approved builder, right? So copy of relative orders in the case of कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, अगर एग्रीकल्चरल लैंड भी है तो उसके लिए भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पे करने हैं, वो लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट रहेंगे जो आपको सबमिट करने होते हैं. नाउ डॉक्यूमेंट्स फॉर हाउसिंग लोन, व्हाट इट इज, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एन ओल्ड हाउस और फ्लैट. अगर आपका ओल्ड हाउस है या फिर आप ओल्ड हाउस ले रहे हो, फ्लैट ले रहे हो, तो उसके लिए अलग से आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे. दैट इज इन द केस ऑफ एन ओल्ड एग्जिस्टिंग हाउस,
old existing house, you will need to get a valuation certificate from approved valuer as well as a certificate from a government approved architect, structural engineer regarding the condition of the flat house as well as its remaining life. कब तक का है वो सारी चीजें वैल्यूएशन सर्टिफिकेट दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्ट ने अप्रूव किया होना चाहिए इंजीनियर ने अप्रूव किया होना चाहिए चार्टर्ड इंजीनियर ने तो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट now, housing loan origination. So, customer who have not identified the property to be brought and in principle approved, the bank give in principle approvals based on customer income and capacity to repay. So, to enable them to identify a house flat with full confidence, all loans are at the sole discretion of the bank. Right? So, repayment का जो भी schedule है वो repayment के as per repayment schedule, you should pay your EMI. You will get an approval as on based on your salary, income, and all. So on that basis, your means EMI will get easy. Bank भी consider करती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी एनुअल सैलरी 25 या 30,000 है सो बैंक एनालिसिस लाइक दैट कि इसे 10 लाख का लोन चाहिए राइट सो 10 या 15 लाख का लोन चाहिए तो ही विल डिसाइड कि यस 15 लाख के लोन पे मतलब आपको नियर अबाउट 15,000 या 13-14,000 का तो EMI आएगा ही आएगा so 15 or 16,000 का जो EMI है are you able to pay it so it's clear they will study on your salary structure and after that they provide the loan so customer needs to identify the property within 3 months for the loan being sanctioned so ये सब process को 3 months 4 months 5 months लग जाते हैं सभी बैंक का रेट नेशनलाइज बैंक का रेट तो कम होता है बट अगर आप जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हो या फिर अदर कहीं से आप लेते हो तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है फॉर एग्जांपल नेशनलाइज बैंक का 7-8% या 8.5% होगा तो वही बाहर में 13% 19% ऐसे 18% ऐसे लोन्स है मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है so verification and processing of housing loan so stage in verification and processing it is a scrutiny of the applications and documents verifications processing charges sanction of loan and disbursal of loan so this is the verification and process after that आपका लोन प्रोसीड होता है so stages in verification and processing में scrutiny of application and documents whatever the documents you submitted all the scrutiny all they verified then they will sanction loan verification is like that कि they check whatever the document submit that is checked by engineer that is checked by valuer self attested है कि नहीं कहीं कुछ query है कि नहीं so they re-verification of all your documents then they charge you processing charges when disbursement of loan then sanctioning of loan and after that the amount of loan deposited on your bank account now housing loan verification and processing so scrutiny first you need to scrutinize your whole documents verification your documents sanctions and disbursal so scrutiny में check credit worthiness of customer आपको guarantor भी लगते हैं right so check credit worthiness of customer then default कोई डिफॉल्ट तो नहीं है उसमें कोई डिफॉल्टर तो नहीं है इसमें देन ब्लैकलिस्ट में तो नहीं है आपका CSR चेक करेंगे आपका क्रेडिट स्कोर भी चेक करेंगे वो लोग सारा चेक करने के बाद ही वो आपको लोन डिसबर्स करेंगे एनी अदर लोन्स कहीं और आपका लोन है क्या वो भी चेक करेंगे नाउ वेरिफिकेशन में वेरीफाई द प्रॉपर्टी दे विल चेक एंड वेरीफाई ऑल प्रॉपर्टी टू असर्टेन द मार्केट वैल्यू उसका मार्केट वैल्यू निकालेंगे कितना है देन वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स राइट उसका वैलिडिटी क्या है डॉक्यूमेंट्स देन सैंक्शन के साथ वो कलेक्ट पोस्ट डेटेड चेक्स ECS standing instructions from customers for EMI collect 0.5 to 1% processing charges and 80 to 90% of the value of the property ascertained by the bank is sanctioned right so on that basis bank sanctioned loan and they will check all things and they charge processing charges and
regarding whatever the valuation of your property and what the loan sanction. तो that particular मतलब प्रोसेसिंग चार्जेस आपको जितना लोन सब में डिसबर्स हुआ है उस पे ही पे करना है, right? Now disbursal, so demand draft is issued to the builder or seller of the property after the customer shows proof for his margin contribution, right? So this is the disbursal. They issue a demand draft regarding that particular amount, and after that builder or seller of the property after the customer shows proof for his margin contribution. Now, what is closure of housing loan? So, loan tenure completed. When loan tenure completed, when loan account closed and documents pertaining to the property returned to the customers. लोन टेन्योर जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एनओसी मिलेगी, which we called एनओसी. So loan account close and documents pertaining to the property returned to the customer. Now customer defaults payment and bank foreclosure the loan. If customer defaults to payment, customer not able to pay the payments, then आपको पता है हमने सरफेसी एक्ट में देखा था कि क्या होता है. So bank has the authority to sell the property and to recover its due from the sold proceed. Amount left after bank dues are covered is returned back to customer and loan account is closed post dated checks return, राइट. सो पोस्ट डेटेड चेक्स रिटर्न के थ्रू आपको बैंक क्या करेगी, बैंक को राइट्स है, अगर आपने ईएमआई पे नहीं किए ऑन टाइम पे तो बैंक हैज राइट टू sell your property and collect their dues, which we have already seen in financial laws, right? So of course financial laws connected to banks, other institutions, if we are not obey the rules, then they have right. So customer request for foreclosure. So what it is to recover complete dues from customers and return the property documents, bank charge foreclosure charges and closure loan account. So what it is closure loan, recovery complete है ना. If recovery is complete, then बैंक क्या करेगी, आपका अकाउंट फोरक्लोज कर देगी और जो भी लोन है उसका लोन खत्म, मतलब आपने लोन कंप्लीट कर दिया, उसका एनओसी आपको दे देगी. नाउ कस्टमर रिक्वेस्ट अनदर बैंक टू टेक ओवर द एग्जिस्टिंग हाउसिंग लोन्स, राइट. तो कस्टमर क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा अनदर बैंक टू टेक ओवर द एग्जिस्टिंग हाउसिंग लोन के लिए. Then bank receives the outstanding balance from another bank, taking over the loan and returns the property documents to the bank. Taking over the loan, foreclosure charges are paid by the bank. Taking over loan is closed once settlement are done. सारे जैसे हम लोग 2 व्हीलर का या 4 व्हीलर का लोन लेते हैं और वो अगर कंप्लीट हो जाता है हमारा, तो बैंक इशू अ सर्टिफिकेट दैट वी हैव क्लियर्ड ऑल loans and process whatever, and they issue a certificate. Now auto loan. What is auto loan? So auto loan are provided by the bank to customer for the following purpose: to buy a new car, jeep or multi-utility vehicles, right? Old car, jeep, उसमें भी आपको मिल रहा है 4 years का सोल्ड. So n number of options available bank to take loan and to disburse loan and processes. Now, what is the eligibility for auto loan? A permanent employee of state, central government का हो या फिर public sector undertaking, private company or reputed establishment or anywhere. Now the professionals or self-employed individual who is an income tax assessee or a person engaged in agricultural and allied activities. So they are मतलब ये इससे related हो, so they will eligible for auto loan, but undertaking is required. Now next,
Auto loan amount criteria. So there is no upper limit for the amount of a car loan. It is limited only by your repaying capacity. So a maximum loan amount of 2 times and the net annual income can be sanctioned. So जो amount होता है उस पे annual का उस पे क्या कर देती है बैंक sanction कर देती है. So if married person or your spouse income could also be considered provided the spouse guarantees the loan. Right. So the loan amount includes finance for one-time road tax and registration and insurance charges. Right. Now, what is the margin of auto loan? So, margin of auto loan is new vehicles 10 to 15%. Now, when loan is up to rupees 4 lakhs, then 15 to 20% when loan exceeds rupees 4 lakhs. So, old vehicles 20 to 30% for vehicles up to 2 years old, and 30 to 40% for vehicles 2 to 4 years old. राइट. सो 2 से 4 साल तक या 4 से सो ऐसा वो कंसिडर किया जाता है. नाउ नेक्स्ट, वेट अ मिनट. Repayment option. So repayment period for new vehicles, it is a maximum of 84 months. How much years? 84 months. And repayment period for old vehicles maximum 60 months. For vehicles up to 2 years old, मतलब 2 साल या 3 साल का अगर हो तो उसमें मिल जाता है. तो maximum 36 for vehicles which are 2 to 4 years old. अगर 2 to 4 years के लिए है तो उसमें 2 to 4 years के लिए है तो बैंक उसमें और 2 साल के लिए या 4 साल के लिए आपको लोन प्रोवाइड कर सकती है. सो यू मे रिपे एट विल विथ नो रीपेमेंट पेनल्टी व्हाटसोएवर. राइट. सो जो भी है आपको पेनल्टी है सो दे विल पे और दे विल repay whatever. Now next it is interest rate on auto loan. So there is two options, same fixed rate and floating rate is there. They will provide it to you. Fixed rate of interest, it is in the case of fixed rate loan, the interest rate on the loan will remain fixed through the entire tenure of the loan. Right. So fixed rate है इसमें जो in the case of fixed rate loan, the interest rate on the loan will remain fixed through the entire tenure. मतलब पूरे साल के लिए आपको फिक्स रेट से ही पे करना होगा. मतलब जो रहेगा 18%. अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हो तो और बैंक से लेते हो तो उससे भी कम आपको rate of interest मिलेगा. So floating rate of interest is the, in case of a floating rate loan, the interest rate would decline or rise in line with the changes in the bank's medium term lending rate. So in case of floating rate loan, मतलब अगर floating है आपका मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आपने 1 साल 2 साल पे किया तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा या चेंज होगा या ज्यादा भी हो सकता है. कम मार्केट के हिसाब से शेयर बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा. उस हिसाब से अगर आप लेते हैं तो फिर आपको कभी ज्यादा कभी कम ऐसा ईएमआई पे करना पड़ेगा. फिक्स रहेगा तो आपका ईएमआई फिक्स रहेगा. तो मैक्सिमम लोग फिक्स रेट से ही लेना पसंद करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि मंथ का इतना पे हमें करना है ना. तो अगर कभी 1000 से ज्यादा पे करना हो तो उनका जो बजट होता है मंथली बजट वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. सो दैट्स व्हाई a number of people have decided to take a fixed rate of interest. Now loan term. So hypothecations. When a property is hypothecated to a bank, it means the original document pertaining to the property will be held with the bank until the loan amount is completely repaid by the customers. Completely repay करना है उनको. An authority is given to a banker, usually a letter of the hypothecation letters. वो सारी चीजें होती है जो आपको बैंक में सबमिट करनी है to sell goods that have been pledged to them as a security for loan. मतलब उसमें क्या होगा कि आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी बैंक की तरफ से. Now life cycle of an auto loan.
सो व्हाट इज लाइफ साइकिल ऑफ ऑटो लोन? ऑर्गेनाइजेशंस में है तो प्रोसेस एंड सैंक्शंस करना है, रिकवरी ऑफ क्लोजर है, ठीक है। सो दैट इज प्रोसेस एंड सैंक्शन क्या है और रिकवरी क्या है वो हम चेक करते हैं। दिस इज द process. So origination of auto loan is submit auto loan application first, ठीक है। उसके बाद what is eligibility criteria? Loan to value of the vehicle is age of the borrower, right? There is minimum and maximum age limit, employment period depend on employment period। जैसे आज आपने लोन दिया और आज मान लीजिए आप 40 years के हो, तो उस हिसाब से आपको वो 10 year देंगे, 15 years का 10 year देंगे, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम जो बैंक का लोन पीरियड होता है वो 20 years का, लेकिन आप अभी 40 के हो तो 20 मतलब 60, और आज का तो आजकल लाइफ का तो कोई ये नहीं रहता है। तो पहले अगर आपको कोई भी चीज के लिए लोन लेना हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, तो सबसे पहले आप अपना इंश्योरेंस निकालिए, ठीक है। तो इंश्योरेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और अच्छा बड़ा इंश्योरेंस निकाले, क्योंकि एट द अभी आपका जो एज है वो बहुत कम है, तो आपको बहुत ही कम प्रीमियम लगेगा, है ना। 20 साल के लिए आप अपना इंश्योरेंस निकाल लीजिए। और जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको अभी होम लोन लेना है, 2-3 पॉलिसी निकाले तो गुड एंड गुड। तो होम लोन जब आप लोगे तो ये आपकी पॉलिसी बहुत, लेकिन ईएमआई रेगुलर पे करिए, ठीक है। इंश्योरेंस जो भी प्रीमियम आप पे कर रहे हो, इंश्योरेंस का मैं बात कर रही हूँ, तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी जब आप होम लोन लेंगे तब आपको बहुत बहुत काम आएगी। क्योंकि होम लोन मतलब ऑन द टाइम ऑफ लोन प्रोसेसिंग बैंक क्या डिसाइड करती है, नहीं इसका इतना वो इंश्योरेंस है। इफ एनी केस आपको कुछ हो जाता है तो बैंक के पास ये रहता है कि ठीक है इसके पास ये लोन है, मतलब ये इंश्योरेंस है जिससे हमारा पैसा क्या होगा, रिकवर होगा। ड्यू टू दिस पैंडेमिक हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने इंश्योरेंस लिया, जिनके फैमिली के लोग गए, वो इंश्योरेंस होने की वजह से उन्होंने सारे जो डेब्ट्स थे वो क्या कर लिए, क्लियर कर लिए। सो पहले तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगी कि सब ने इंश्योरेंस लेना चाहिए। उसके बाद आप आगे जो भी लेना चाहते हो, गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, या फिर आपका होम लोन हो, फ्लैट हो, लैंड हो, तो ये प्रोसेस आपको बाद में बहुत काम आती है। मतलब स्पेशली लोन लेने के लिए आप एलिजिबल रहते हो, और बैंक भी आपको इजीली लोन पे करती है अगर आपका पहले से ही है, और वो चेक करती है कि आप एलआईसी है या फिर जहाँ पे भी आप कर रहे हो पेमेंट, वहाँ पे क्या है आपका रेगुलर पेमेंट है, तो ऑन दैट बेसिस पे बैंक आपको लोन देती है। सो द प्रोसेस इज लाइक दैट कि एज मैटर करता है, एज के ऊपर आपका बैंक ईएमआई का टेन्योर मैटर करता है, और आपका कोलेटरल रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितना प्रॉपर्टी है, कितना सिक्योरिटी है, वो भी बैंक आपका चेक करती है। सो विच द लोन इज टेकन is kept as the collateral with the financer. Now margin. Margin is the customer contribution, new vehicles. So 10 to 15% up to 4 lakhs. Right? अगर आपको 10 से 4 lakhs अगर लेना है तो 10 से 15% का रेट ऑफ रहेगा जो भी मार्जिन है, और 15 to 20 अबव, मतलब 4 लाख से अबव लेना है तो ओल्ड ये व्हीकल का है। सो ओल्ड व्हीकल पे 20 to 30% एंड 30 to 40%। सो डिटेल ऑन नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी तो आपको पता ही है कि पेट्रोल का रेट ज्यादा होने की वजह से पेट्रोल की जो गाड़ियां है वो बहुत ही कम लोग ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ रेट ऑफ पेट्रोल इज टू मच हाई, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। सो पीपल सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लेना अच्छा है या नहीं, और उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन की वजह से बहुत हमें दिक्कत होती है, स्पेशली मिडल मैन को, राइट। बिकॉज इनकम तो उसका बढ़ने से रहा, और बाकी की भी जो है प्रोसेस, उसको उसका बजट रहता है ना कि ये महीने का इतना है, वही इतना जाना ही चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसे फेस करनी पड़ती है। नाउ डॉक्यूमेंटेशन। तो documentation पे the documents required for a salaried individual, it is proof of income, latest to attest salary slip with TDS, राइट। आपको टीडीएस भी देखना है कितना कट रहा है आपका, प्रूफ ऑफ इनकम देना है, सैलरी स्लिप्स देना है, टीडीएस सर्टिफिकेट एंड फॉर्म 16 भी आपको
पे करना है। नाउ प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, ठीक है, रेसिडेंस का क्या प्रूफ है, आपने टैक्स पे किया है कि नहीं, आपके पास रेशन कार्ड है कि नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, आपका वोटर आईडी कार्ड है कि नहीं, इलेक्ट्रिक बिल है कि नहीं, इंश्योरेंस पॉलिसी है कि नहीं, ठीक है, मैंने अभी बताया, देखिए ये सारी चीजें आपको लगनी है। सो बैंकिंग हिस्ट्री, फोटो कॉपीज ऑफ द बैंक स्टेटमेंट शोइंग लास्ट 3 मंथ, फोटोग्राफ्स लगेंगे, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में पासपोर्ट कॉपी, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस एंड एम्प्लॉयर्स कार्ड। नाउ सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन फॉर द फ्रॉम द बैंक, ठीक है, ये सारी चीजें आपको लोन सैंक्शन करने के लिए लगेगी। Documentation. The documents required for a self-employed individual, that is balance sheet and P&L account for the last 2 years certified by an auditor, ठीक है, ऑडिटर ने आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ऑडिटेड बैलेंस आपको लगेंगे जो चेक किए हुए हैं, जो ऑडिटेड है। Acknowledge copy of IT returns for last 2 years, IT returns के डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, proof of residence, ration card, driving license, voter ID card, electrical bills, insurance policies, telephone bills, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पे करनी है। देन बैंकिंग हिस्ट्री, बैंकिंग की क्या हिस्ट्री है, फोटोकॉपीज ऑफ द बैंक स्टेटमेंट शोइंग लास्ट 3 months ट्रांजैक्शंस, है ना, फोटोग्राफ्स, proof of identity, passport copy, voter ID card, driving license, employers card, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपका आईडी कार्ड होता है ना, सिग्नेचर वेरिफिकेशन फॉर्म एंड सोल प्रोप्राइटरशिप डिक्लेरेशन ऑन द लेटर हेड। ऑटो लोन वेरिफिकेशन के लिए आपको ये स्क्रूटनी रहेंगी, चेक क्रेडिट वर्दीनेस, कस्टमर डिफॉल्ट और ब्लैकलिस्ट, ये सब चेक होगा। वेरिफिकेशन में फिर से आपको वही वेरिफिकेशन लगेगा ऑफिस में, वेरीफाई वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके जो भी है, फिर आपका लोन सैंक्शन होगा एंड चेक्स ईसीएस बेस पे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम कस्टमर ऑफ ईएमआई एंड कलेक्ट 0.5 to 1% प्रोसेसिंग चार्जेस यू नीड टू पे, सैंक्शन 80 to 90% ऑफ वैल्यू ऑफ vehicle, जो भी vehicle का वैल्यू रहेगा। So demand draft is issued to the seller of the vehicle after the customer shows proof of for his margin or contribution. Now closure of auto loan. So request and closure. So loan tenure completed, right? लोन का जो टेनियर है वो कंप्लीट होने के बाद लोन अकाउंट क्लोज एंड डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू द व्हीकल रिटर्न टू द कस्टमर, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। देन कस्टमर्स डिफॉल्ट्स पेमेंट एंड बैंक फॉर क्लोज द लोन, उसमें बैंक को अथॉरिटी है कि वो आपके घर आके आपका व्हीकल लेके जा सकती है और आपका व्हीकल सेल करके वॉट एवर द बैंक का लोन है वो रिकवर कर सकती है। सो बैंक हैज अ राइट एंड is a return back to customer and loan account is closed post dated checks return, और उसका जो भी है उसे वो वापस कर देती है। Now customer request for foreclosure, so recover complete dues from customers and return the vehicle documents, bank charges, a foreclosure charges and close loan accounts. Now next, now abhi education loan. What is the process of education loan? These loans are specifically offered for the pursuit of academic in recognized school, college, and various other educational institutions, both in India and abroad. So you may avail for this loan facility to meet eligible courses. What it is eligible courses? Graduation course, post graduation course, and professional course. है ना, आपको ग्रेजुएशन कोर्स करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना है या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना है तो बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगी। नाउ अदर कोर्सेज लीडिंग टू डिप्लोमा डिग्री कंडक्टेड बाय कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज अप्रूव्ड बाय यूजीसी गवर्नमेंट एंड एआईसीटी, तो इस पे आपको लोन मिलता है। एजुकेशन लोन में एक्सपेंसेस कंसिडर्ड फॉर लोन, सो फीस पेएबल टू कॉलेज स्कूल और हॉस्टल देगा, एग्जामिनेशंस लाइब्रेरी लेबोरेटरी फीस रहेगी उसमें, परचेस ऑफ बुक्स इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूनिफॉर्म्स, कॉन्शियस डिपॉजिट, बिल्डिंग फंड, रिफंडेबल डिपॉजिट, ट्रैवल एक्सपेंसेस, पैसेज मनी फॉर स्टडीड अब्रॉड, परचेस ऑफ कंप्यूटर्स कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर कंप्लीशन ऑफ कोर्स।
एंड कॉस्ट ऑफ 2 व्हीलर्स अप टू ₹50,000। ठीक है, ये सारा उसमें इंक्लूड होता है, तब जाके आपका एजुकेशन लोन सैंक्शन होता है। एजुकेशन लोन अमाउंट, सो एजुकेशन लोन अमाउंट जो है फॉर स्टडीज इन इंडिया मैक्सिमम ₹10 lakh और स्टडीज इन अब्रॉड मैक्सिमम ₹20 lakh। अगर आप इंडिया से पढ़ना चाहते हो कहीं भी, कहीं से भी इंडिया में, कहीं से भी आईआईएम वगैरह में आपको एजुकेशन लेना है, क्योंकि आईआईएम का फीस तो होता ही है इतना 10 लाख से भी ज्यादा। तो अगर आपको आईआईएम से पढ़ना है एजुकेशन लोन लेके तो 10 लाख, और अगर अब्रॉड में पढ़ना है तो आपको 20 लाख का लोन सैंक्शन होगा, राइट। नाउ मार्जिन क्या है फॉर लोन अप टू ₹4 lakhs, नो मार्जिन। 4 लाख तक अगर आपको चाहिए तो उसमें कोई मार्जिन नहीं है, बट 4 लाख के अबव है तो मार्जिन आर अंडर द। इन केस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया द मार्जिन इज 5% के हिसाब से मिलेगा, अब्रॉड में है तो 15%, एंड नो प्रोसेसिंग फी अपफ्रंट चार्जेस। ठीक है, मतलब इसमें आपको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन देना है, बाकी आपको कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं पे करनी है। नाउ एजुकेशन लोन इंटरेस्ट, loan up to ₹4 lakhs may be advanced at interest rate not exceeding. So PLR of the bank above ₹4 lakh, the interest rate may be, जो भी आपका PLR होगा है ना, उसके ऊपर बेस करेगा, एंड इट इज 1%। Repayment method, the repayment method being 1 year after the course period of 6 months after you get a job, whichever is earlier. So you are expected to pay minimum amount equivalent to the EMI on a monthly basis. जॉब मिलने के बाद आपको एजुकेशन लोन जो है उसका रीपेमेंट करना है, उसके पहले आपको रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सो यू आर एक्सपेक्टेड टू पे अ मिनिमम अमाउंट इक्विवेलेंट टू द EMI ऑन अ मंथली बेसिस। जो भी आपको EMI रहेगा वो उसे मंथली बेसिस पे पे करना है जॉब लगने के बाद। You can choose to pay more than the EMI, and do no uh, we do not charges any prepayment penalty। ठीक है, so what is origination of education loan? So applications, eligibility criteria, margin, documentations. So existing customers submit form, should be an Indian national, secured admission to professionals, technicals courses, entrance fee जो भी होता है वो सब इसमें आ जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस, सिक्योर्ड एडमिशन टू फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो मार्जिन रहेगा उसमें कस्टमर कंट्रीब्यूशन अप टू 4 lakhs, नो मार्जिन अबव 4 lakhs, 5%, 15% ऑन दैट बेसिस। नाउ एजुकेशन लोन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है? यू विल नीड टू फर्निश द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म। Relevant information would relate to the guardian and the student both when the loan is jointly taken. Marksheet of last qualifying examinations for schools and guarantees graduate studies in India, जहाँ से भी आपने किया है उसका marksheet. Proof of admission to the course, schedule of the expenses of the course, copy of letter confirming scholarships, copy of foreign exchange permit if applicable, 2 passport size photographs, statement of bank accounts for the last 6 months of borrower, income tax assessment order not more than 2 years old, brief statement of assets and liabilities of the borrower. If you are not an existing bank customer, you would also need to establish your identity and give proof of residence. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है रिगार्डिंग बहुत इजी है, आप ले सकते हो। अगर आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए, आईआईएम से वगैरह आपको एजुकेशन लेना है तो आप लोन बेसिस पे कर सकते हो। तो जो मतलब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अच्छा पैकेज चाहिए है और वो रियली में ब्रिलियंट है, तो दे वो वो क्या करते हैं, लोन लेके अपना एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करते हैं। यस, नाउ education loan verification and processing, it is scrutiny, verification, sanction and disbursal. So check credit, what it is, worthiness of customer, guarantor, default, blacklisted, any other loans held.
तो वेरिफिकेशन में वेरीफाई द एड्रेस एंड ऑफिस ऑफ कस्टमर्स गारंटर, वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सैंक्शन में आपका कलेक्ट पोस्ट डेटेड चेक्स, ईसीएस लगेगा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर कस्टमर ऑफ ईएमआई, और इसमें नो प्रोसेसिंग चार्जेस है। सैंक्शन लोन बेस्ड ऑफ मार्जिन। सो जो भी डिमांड ड्राफ्ट है इशू टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, राइट। सो ये सारी प्रोसेस आपको बैंक में सबमिट करनी है और ऑन दैट बेसिस पे बैंक वेरीफाई करके आपको सारी चीज देगी। सो क्लोजर ऑफ एजुकेशन लोन इज लोन टेन्योर completed and ensure all dues are recovered and account closed. So customer request for foreclosure and no repayment charges, recover all dues and close। आपका एक बार सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, सारी रिपेमेंट की पेमेंट ऑन टाइम पे हो जाती है, तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगता है। वो आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं नो ड्यूज का कि अभी आपका ये लोन कंप्लीट हो गया है और आपके कोई भी ड्यूज पेंडिंग नहीं है। नाउ द प्रोसेस ऑफ पर्सनल लोन। So for personal loan, to meet any kind of personal expenses like that, marriage हो गया, फैमिली फंक्शंस के लिए चाहिए, या फिर मेडिकल के लिए चाहिए, एजुकेशनल चाहिए, ट्रैवल के लिए चाहिए, so you will get it. So personal loan eligibility, what it is? A state, central government employee, employee of public sector undertaking, reputed profit making, public limited company, reputed institutions, then MNC, ठीक है, municipal corporations जो है, with a minimum service experience of 2 years. So a self-employed engineer, doctor, architect, chartered accountant, MBA with minimum 2 years standing. So you should be 60 years of age or less. So you are is liable to pay that amount, right? Now a pensioner of PSU, public service का अगर है, so central state का है, तो public sector bank who has taken premature voluntary retirement and is 60 years of age or less है उससे, है ना। Then agent of insurance mutual fund 3 to 5 years standing who are tax assessee and whose gross annual income not exceed rupees 2 lakhs, and trader who have cash flow to repay the loans and can provide adequate tangible collateral security. So they should restrict their banking requirements to the branch where the loan is proceed to be taken. So personal loan amount, आपका पर्सनल लोन कितने तक सैंक्शन हो सकता है? योर पर्सनल लोन लिमिट वुड बी डिटरमाइंड बाय योर इनकम एंड रीपेमेंट कैपेसिटी इज 24,000 और मैक्सिमम 12 टाइम्स नेट मंथली इनकम ऑफ सैलरी इंडिविजुअल्स एंड पेंशनर्स। उसमें जितना रहेगा आपको वो मिलेगा। सो 1 year net annual income in case of self-employed professionals with the under noted ceiling. So additionally, your spouse income can be considered in calculating the loan amount, provided she whatever loan guarantees will jointly take it. आप ज्वाइंट करके भी ले सकते हो। सो सैलरीड इंडिविजुअल्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल जो भी है उनको 2.5 लाख तक लोन का सैंक्शन मिलेगा, उनको 1,50,000, और ट्रेडर जो है उनको 1 लाख तक का लोन इजीली मिल सकता है। कौन सा लोन? पर्सनल लोन, ओनली पर्सनल लोन। So what is the documents required for personal loan? So documents required for important documents, and that is for your flexi existing बैंक कस्टमर्स है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सैलरी का स्लिप मतलब फॉर्म 16 और सैलरी स्लिप, और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको आईटी का रिटर्न देना है, लास्ट 2 इयर्स का सेम डॉक्यूमेंट्स। प्रोफेशनल प्रूफ में क्वालिफिकेशंस क्या है आपका, डिग्रीज है ना, प्रूफ ऑफ ऑफिशियल एड्रेस क्या है आपका, ये सारी चीजें आपको वहाँ पे सबमिट करनी है। रीपेमेंट करने के लिए क्या करना है? तो लोन इज रिपेबल इज 48 EMI इन 5 साल के लिए या फिर 4 साल के लिए। You are allowed to pay more than the EMI if you wish to without attracting any repayment
परमानेंट पेनल्टी. प्रोसेसिंग फीस क्या है? प्रोसेसिंग चार्जेस आर 1% ऑफ द लोन अमाउंट एंड दिस इज अमंगेस्ट द लोएस्ट फी, है ना, सबसे लोएस्ट फी इन द इंडस्ट्री. एंड प्रोसेसिंग फीस हैव टू बी पेड अपफ्रंट, so there are no hidden cost or other administrative charges. This is the verification of your personal loan. All documents you need to submit with guarantors, address proof and salary proof. Then individuals, if eligibility criteria है आपका है तो ये पर्सनल आपका कोई बिजनेस है या फिर आप सैलरीड हो, ऑन दैट बेसिस पे आपको लोन सैंक्शन होगा. डॉक्यूमेंटेशंस में आपका एप्लीकेशन फॉर्म, फोटोग्राफ, बर्थ का प्रूफ, रेसिडेंस का प्रूफ, सैलरी प्रूफ, फॉर्म 16, बैंक का स्टेटमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लगेगी. और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेम प्रोसेस है, लेकिन उसमें आईटी रिटर्न्स आपको सबमिट करने हैं. और दिस इज द पर्सनल लोन जो वेरिफिकेशन है उसका है कि पहले चेक होगा, सेम है ब्लैक लिस्ट में अगर आते हैं तो बैंक हैज राइट टू जो भी सिक्योरिटी वो देंगे वो आपको सेल करके उनका अमाउंट रिकवर करेंगे. सो ऑल ईसीएस वगैरह चेक करेगी और उस बेसिस पे वो क्लोजर में भी आपका लोन 10 ईयर कंप्लीटेड के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स देंगी और अगर आप डिफॉल्ट है तो आपके ड्यूज वो कलेक्ट करेगी. राइट. सो कंज्यूमर लोन हम बाद में देखते हैं, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. yes. किसी को कुछ पूछना है लोन प्रोसेस से रिगार्डिंग? yes, am I audible to all of you? Yes, ma'am. Okay, so see you tomorrow. Yes, see you tomorrow. Bye bye, take care. Thank you, ma'am.